I'm Arpita Sharma, a second year B.Sc nursing student at GMCH Chandigarh. This video is going to be around B.Sc nursing only. So today we're going to discuss about B.Sc nursing. B.Sc nursing is a 4-year, or we can say 7 semesters of degree course in India. I'm only not Chandigarh, I'm only talking about India. So yeah, it is a degree course in India. So recently it has been converted into semester system. पहले ये yearly system में होता था. Recently it has been converted into a semester. So I study in a semester format system in a college in Chandigarh, that is GMCH. Now in our college we इसके अंदर एक फ़ायदा है semester system का, क्योंकि we have 7 semesters of like studying and giving exams, and then we have like 6 months of our internship. तो internship हमारी paid होती है. In government colleges at least it is paid, and आपके उसी hospital के अंदर होती है internship. You work as a full-time nursing officer. एंड जिसके अंदर आपके शिफ्ट्स के अंदर ड्यूटी लगेगी मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट्स, एंड यू बेसिकली बिकम अ नर्सिंग ऑफिसर इन योर इंटर्नशिप, राइट? यू गेट टू एक्सपीरियंस द रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी ऑफ अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप. So now coming into what is B.Sc nursing. B.Sc nursing, as I already told you, कि it's a 4-year degree course, okay? Or you can say 7 semesters or 7 into 6 months of like training, okay? That is our training period, and then once your training is over, you become an intern, a nursing intern, and after that you can apply for any government job or any government or a private sector you can go through, or you can crack any of your like outside exams. Or the exam that I know about is NCLEX. It's an exam for RN, registered nurse. You can become in a foreign country. And so coming to the division of the subjects in each semester. So talking about the first semester, you have English, of course. It's a basic thing that you need to have in a medical college. Anatomy and physiology, and sociology and psychology. These are the 2 subjects जो अलग-अलग बांट रखे हैं. तो ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर होते हैं. सेकंड सेमेस्टर के अंदर होता है बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, एंड नर्सिंग फाउंडेशंस टू. सो नर्सिंग फाउंडेशंस का सेकंड सेमेस्टर के एंड में इकट्ठे पेपर होता है, बट यू लर्न दैट फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ, फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर टू सेकंड सेमेस्टर. Coming to the third semester में you have microbiology, and you have AHN 1. AHN is basically adult health nursing 1. Coming to the fourth semester, I am currently studying in my 4th semester. I'll be in my 5th semester nearly in November this year. So yeah, 4th semester के अंदर आपके पास आएगा PPG, that is pharma pathogenetics. There's going to be one exam for all 3 of these. So PPG and AHN 2, that is adult health nursing 2. And as far as the internal subjects are considered, we have professionalism as an internal subject. Then coming to the 5th semester, we'll have child health nursing 1, mental health nursing 1, then nursing and research statistics, and yeah, that is it. Forensic nursing का थोड़ा सा एक पार्ट होता है 5th semester में. Coming to the 6th semester, we'll have child health nursing 2, mental health nursing 2, community health nursing 1, and epidemiology, and then midwifery and gynecology obstetrics वो होता है हमारे 6th semester में. 7th is going to be a little lighter, community 2, and midwifery and obs and gynae 2. And the 8th semester will be throughout internship, and there's only going to be a practical residency होती है basically हमारी वो residency posting बोलते हैं उसको. Okay, now that we have the complete layout of what all we're going to learn about the 7 semesters of nursing, एक बहुत genuine question जो कि बहुत बच्चे पूछते हैं मुझसे, not only on YouTube, even my juniors at GMCH, they also ask me कि ma'am, I have been working like as a nursing student for 2 years in GMCH, right? Don't you ever feel the inferiority complex from the like the mbbs people, or you know, आपको mbbs वाले बच्चों से थोड़ा सा ऐसे inferiority complex तो नहीं आता? So let me tell you one thing, कि जितना clinical exposure nursing के अंदर है उतना clinical exposure mbbs में नहीं है, ठीक है? तो you will never ever, you know, cross paths in a hospital with the MBBS people, okay? So हमारा जो college है that is different, and MBBS का college is different, so the building is different basically, so you never cross paths with the MBBS students. And as far as the hospital is considered, you work with the JRs, you work with the interns, the MBBS interns, okay? You never get to like interact with the MBBS students. Like अगर मैं second year में हूँ तो मेरे को second year के MBBS students से कोई लेना देना ही नहीं है, because they are not given any clinical exposure. उनको कोई clinical exposure नहीं है. This might sound a little like I'm overpowering myself, but yes, I have taught the interns, the MBBS interns, how to put a cannula, how to take an ABG sample, how to take a simple venous sample as well, okay? So this is all that I have actually taught interns at GMCH. Not boasting about it, but I'm just telling you that clinical exposure जो है वो हमें ज़्यादा है, because हमें day 1 से hospital में से मतलब ward में छोड़ दिया जाता है, that go, okay? So first year के अंदर, first semester के अंदर हमारी duty लगती है surgery, ortho and medicine ward. These are the 3 places that we go for duty in our first semester itself. And यहाँ पे बहुत अच्छा clinical exposure मिलता है, क्योंकि आपको हर तरह का patient देखने को मिल जाता है, from the medicine cases, from the ortho cases, from the medicine ortho and surgery cases. आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है from in the first semester itself. And जो nursing officers होते हैं वो आपको खुद बोलते हैं कि जाओ history collect करो, take the vital signs of the patient, take the you know, ask about the signs and symptoms, take the chief complaints क्या क्या थी, where do they come from. You talk, जितना आप पेशेंट से बात करोगे उतना आप उनसे फ्रेंडली होते जाओगे, उतना आपको लाइक पता लगेगा पेशेंट के बारे में, है ना?
तो या दिस इज़ वन थिंग दैट आई हैव सीन. एंड MBBS में क्लिनिकल एक्सपोजर इज़ प्रैक्टिकली जीरो. ओके, अपार्ट फ्रॉम द इंटर्नशिप में उनको थोड़ा सा ऐसा पार्ट होता है कि हाँ मतलब दे गो टू द पर्सन. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंटर्नशिप पीरियड अभी चल रहा है हमारे GMCH में. आई ओनली सी इंटर्न्स टेकिंग सैम्पल्स, taking patients for the X-rays, CT scans. I don't see like the interns actually taking a history of a patient. I have never seen that. मैं रोज ड्यूटी पे जा रही हूँ. I have been posted in ICU, HDU, emergency wards, surgery emergency, ortho emergency, everywhere, and I haven't seen one intern taking history of a patient, taking the vital signs of the patient. Okay fine, vital signs उनका काम नहीं है, but उनको like practical में कफ भी नहीं बांधना आ रहा होता. Practically speaking, अगर उनको vital signs नहीं आते लेने के लिए तो I don't know like what they are doing in MBBS. but चलो, we are not degrading any profession here. We are just saying that nursing is also a very qualified, very good profession to be in. It is not something, yes, nurses are looked down upon by the doctors, but that is not very like abhi nahi is always a sir and ma'am, and there is a designated post as nursing officer. So you will have to call every nurse as a nursing officer, right? And we are the nursing interns if you are going as interns, or we are the nursing student if we are going as a student, right? So yeah, this is something that has to be followed in a hospital. It is followed over here in GMCH, apart from a few JRs here and there, but it is currently followed. Coming to the next question, that was the duties of a nurse. So आपको एक practical example देती हूँ. A doctor comes to a patient. He lists down the chief complaints, the signs and symptoms, past medical history, everything he takes, okay? And वो उसको नोट कर देता है. देन वो अपने किसी लाइक बड़े डॉक्टर से आता है. बड़े डॉक्टर इज बेसिकली एन SR और अ कंसल्टेंट. ही गोज देयर, ही टॉक्स अबाउट द केस एंड एवरीथिंग. देन ही डायग्नोसिस द पेशेंट, कि पेशेंट को डायग्नोस करेगा कि क्या हो सकता है पेशेंट को. उसके बाद वो उसको दवाइयाँ लिख के दे के चला जाएगा, राइट? उसके बाद रोल शुरू होता है नर्स का. अ नर्स बेसिकली यूजेज her resources to take the vital signs of the patient, to note the intake and output of the patient, to measure the glucose and everything, the body glucose level, everything that is done by the nurse, and she records it, right? अगर कोई भी दिक्कत आती है तो the nurse is always present in the ward. Doctor may or may not be present in the ward, but a nurse is always on duty. तभी nurses की duty is like 6 hours and 12 hours at night, just because the patient needs a nurse more than a doctor. Then medications, all the medications are given by the nurse. Of course, they are prescribed by a physician, by a certified doctor. Only then it is given by a nurse. So these are all the duties of a nurse. कई बच्चे आते हैं कि मैम हमें लाइक छोटा काम तो नहीं करना पड़ेगा. देखो, when you coming to a hospital, there is nothing as छोटा काम and बड़ा काम. Okay, you are working in a hospital, you are working for the welfare of the patient. There is nothing as कि मेरे को कोई छोटा काम तो नहीं करना पड़ जाएगा. We as a nursing student, we have done things. हमें boxes label करने को बोल देते थे when we were first years, कि boxes label कर दो, set करके रख दो medications, expiry देख लो medications की, whichever are expired just cut it and throw it. तो ये चीज़ें हमने करी हैं, no doubt. बट वही एंड में वही बात आ जाती है दैट दीज आर ऑल द थिंग्स दैट नीड टू बी मेंटेन्ड इन अ वार्ड. अगर कभी पेशेंट को एक इमरजेंसी ड्रग देना पड़ गया और वो एक्सपायर्ड वहाँ पे पड़ा हुआ, तो वो किसकी जिम्मेवारी? वो एक नर्स की जिम्मेवारी है ना, कि आपने ही दिया था. तो yes, it does come under nurses jurisdiction, what all nurse has to do. I think it's a beautiful profession यार. मतलब आप 4 साल की नर्सिंग करते हो, उसके बाद you can like become a nursing officer into a government hospital. Like आप एक एग्जाम होता है NORCET नाम का, NORCET. It's a all India medical nursing officer exam, जिसके अंदर आपको थ्रू आउट इंडिया जितने भी एम्स हैं, एम्स दिल्ली, एम्स बिलासपुर, एम्स जम्मू वगैरह, जितने भी एम्स हैं, उनके अंदर आपको एज अ नर्सिंग ऑफिसर ड्यूटी करनी, लाइक यू कैन, राइट? सो दैट इज अ गुड एग्जाम टू क्रैक. एंड लगते सार आपकी इनकम इज लाइक 1 लाख रुपीज़, लाइक इन हैंड तो कम मिलती है, बट येस ऑफकोर्स 1 लाख रुपीज़ इज द लाइक मिनिमम दैट यू अर्न एज अ नर्सिंग ऑफिसर. सो आई फील इट्स मोर देन इनफ, मोर देन सफिशिएंट फॉर अ 4-year degree course now in medical. And then apart from that, if you are not very comfortable doing a nursing job, है ना, आप वो शिफ्ट्स में काम नहीं करना चाहते, do your masters and like probably give an exam for some college professor or associate professor, become that, do your PhD side by side. There are a lot of options to look for in B.Sc nursing, I feel. And this is something that still people have doubts upon, कि हम अपने बच्चे को नर्सिंग में भेजें या नहीं भेजें. बच्चे, पेरेंट्स क्या, बच्चे भी आजकल ऐसे हैं कि वो सोच लेते हैं कि मतलब नर्सिंग में आए कि ना आए. To be very honest, when I took a drop year, one of my friends was also already doing B.Sc nursing in GMCH itself. उसने भी मुझे डरा दिया था that अर्पिता नर्सिंग तो मत करियो, है ना, नर्सिंग में तो ये होता है वो होता है. बट देन when I came into nursing, I realized that इस प्रोफेशन की डिग्रेडेशन ना हमने खुद करी हुई है. हम खुद अपने उसको अपने होराइजन को ना बड़ा नहीं रखना चाहते. वी ourselves construct our horizon into कि नर्सेस का काम तो ये होता है जी, नर्सेस का काम तो ये होता है, नर्सेस तो डॉक्टर के अंडर आती हैं. इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट इज़ एक्चुअली नॉट लाइक दैट. Nurses and doctors, like they worked in togetherness for the welfare of the patient. There is nothing like up and down or बड़ा या छोटा.
इट्स ऑलवेज लाइक टुगेदर, राइट? ऑफ कोर्स उन्होंने नीट क्लियर किया है, उन्होंने उन्होंने पीजी दिया है, दे आर ऑफ कोर्स मोर लर्नड देन यू, बट यू नो योर ड्यूटीज वेल, राइट? जो आप कर सकते हो वो लोग नहीं कर सकते. पीजी लाइक जेआर्स कैन एक्चुअली, उनके हाथ कांपते हैं कभी कभी कैनुला डालने के लिए भी, तो आप क्या ही कहोगे. वेर एज इफ यू गिव अ पेशेंट टू मी, आई विल कैनुलाइज हिम एंड आई विल स्टार्ट हिज मेडिकेशन देयर एंड देन, क्योंकि अब आदत हो गई है. आई हैव बीन वर्किंग लाइक एज अ स्टूडेंट नर्स फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नाउ, एंड yes, that's it for this video. Nursing is not like, it's the most humble profession that I could ever see, and I think last में बस इतना ही कहूँगी यार कि जब पेशेंट्स आपको वो लास्ट में वो ऐसे सीस देके जाते हैं ना कि थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हम ठीक हो गए. ऑफ कोर्स इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ अ डॉक्टर एंड अ नर्स, बट वही है कि आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो. तो आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी मेडिसिन के अंदर ड्यूटी थी. देयर वाज एन अंकल, ही वाज सफरिंग फ्रॉम COPD, ही वाज वेरी क्रिटिकल, बट देन समहाउ आफ्टर आई थिंक 5 days he got discharged, and he could not speak. He had this problem पहले से, he had a brain hemorrhage, so he could not speak. तो आंटी, the wife of that uncle, she used to be, वो हमेशा मुझसे बातें करते थे कि बेटा तू कहाँ से है, ये वो, मतलब I used to talk to her and I used to tell him कि आंटी कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, अंकल ठीक हो जाएंगे. And that's what happened, right? अंकल ठीक हो गए, and when they went home, and I remember I was on duty, and उस दिन जब वो जा रहे थे, she smiled such, she gave me such a big smile, and you know she gave me an आशीर्वाद. तो वही चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा याद आती हैं. I still remember that happened around 1 year ago now, but I still remember that because that is something that really touched my heart, because she was like कि ये लड़की आती थी, सुबह पूछ के जाती थी अंकल ने खाना खाया क्या, अंकल ने दवाई ली क्या, इंजेक्शंस देके जाती थी. शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ अस. तो मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप लाइक लाइफ में कमाते हो थ्रू आउट योर जर्नी, एंड वो काफ़ी अच्छा लगता है, राइट? इन नो वे दिस वीडियो वॉज डिग्रेडिंग द MBBS प्रोफेशन, द मेडिकल, द डॉक्टरी प्रोफेशन. आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डॉक्टर्स, बट येस, नर्सिंग इज समथिंग दैट नीड्स टू बी लाइक अपलिफ्टेड अ लिटिल, क्योंकि हमने खुद ही इस प्रोफेशन को थोड़ा थोड़ा करते करते ना हमने डिग्रेड कर दिया. सो दैट इज़ व्हाट आई फील. Yes, and that is it for this video. I hope you liked it. I hope I did not speak a lot. I am speaking like 20 minutes से मैं बोल रही हूँ, 20 minutes से मैं बोल रही हूँ, and I'll have to cut short this video. Yeah, that is it for this video. I'll see you again in another video. Please comment down below what next do you want to see from this nursing life of mine, and yeah, that is it, and I'll see you again in the next video. Till then, bye bye.